Hey everyone, today we will learn how to create users and groups. So this topic belongs to the outline like user and group management. Okay. So first what you have to do is search for computer management, and here we go, computer management. Just click on it and it will open a new window here. Okay. So you have to click on local users and groups. Okay, so the user folder will display all the users active or enabled or disabled in your PC, and the groups will contain all the groups, okay, active, enabled or created in your PC. So first we will go with users, so double click on it and it will show all the users in your system. सो हर एक यूज़र की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पे। आप लोग इस तरह से इसको एक्सपैंड करके पढ़ सकते हो। लाइक एडमिनिस्ट्रेटर का है तो इट्स बेसिकली बिल्ट इन, एंड दिस इज द अम्बर यूज़र। राइट नाउ इट्स एक्टिव, enabled, and default account, that's the default account by the system, that's the guest account, and that's the WDA utility account. Okay, so if you have to create a new account, just simply right click and go to the new user. Oh sorry, click on the new user. Okay, so when I click on it, you can see I have a new window here, and enter the information like the username. I'm going to enter the username is IT5, and the full name is IT5 2022 to 2025. Okay, let's remove the, okay. Okay, so that's the username IT5 and that's the full username. You can also add the description like this user is created for practical purposes. Okay, so I have written the description. Now what you have to do is select a suitable password for your new user. So I'm going to enter the password Amber. मैं हर जगह सेम पासवर्ड, मतलब जब भी कोई प्रैक्टिकल वगैरह करवाती हूँ तो सेम पासवर्ड इसलिए रखती हूँ क्योंकि बाद में मुझे बहुत जल्दी भूल जाता है। ओके, तो ये वाला जो नीचे डायलॉग बॉक्स है ये कहता है कि भाई जब आपका जो यूज़र है ना, ये वाला IT5 का, जब ये लॉगिन हो ना तो उसको पासवर्ड चेंज करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट लॉगिन पे उसको क्या करना पड़े, पासवर्ड चेंज करना पड़े। तो मैं नहीं चाहती भाई उसको इतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मैंने देनी कि मतलब वो बाद में पासवर्ड चेंज कर ले अपने अकाउंट का, मुझे पता ना चले। नहीं भाई, मैं चाहती हूँ मैं प्रॉपर नज़र रखूँ 85 पे। तो मैं इसको चेकआउट कर दूंगी, इसको चेक इन नहीं करूँगी, इसको अनचेक कर दूंगी। ओके, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगी कि भाई यूज़र अपना पासवर्ड चेंज ना कर पाए। ठीक है, और ये जो पासवर्ड रखा है मैंने अंबर अंबर, ठीक है, ये कभी भी एक्सपायर ना हो। ठीक है, मतलब वो उसको एक तो पासवर्ड चेंज कर नहीं सकता और दूसरा दूसरा ये है कि ये वाला पासवर्ड कभी एक्सपायर भी ना हो। ठीक है, तो राइट नाउ अकाउंट इज डिसेबल्ड, मतलब अकाउंट को डिसेबल करना है। नो नो नो, आई डोंट वांट टू डिसेबल दैट अकाउंट, मुझे ये अकाउंट चाहिए, मैंने ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है, तो मैं उसको अनचेक कर दूंगी। ठीक है, मुझे अकाउंट इनेबल ही चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्रिएट कर दूंगी। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे आपको यहाँ पे IT5 के नाम से यूज़र नज़र आ जाएगा। सो बेसिकली सिर्फ यूज़र क्रिएट करने का यहाँ तक ही काम था। ठीक है, अगर आप इसको बंद करो और आप सिस्टम को जब भी रीस्टार्ट करोगे, ऐसे ही यूज़र क्रिएट करने के बाद आप जैसे ही अपना अकाउंट इसको रीस्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग विंडो पे ही वो पूछेगा कि कौन से वाला यूज़र विंडो यूज़ कर रहा है। मतलब वो पूछेगा कि आप अंबर के अकाउंट में लॉगिन करना चाह रहे हैं, मतलब पासवर्ड एंटर करके एंटर होना चाह रहे हैं IT5 में। तो मैं तो अभी ये लॉगिन नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव द रिकॉर्डर हियर। तो अगर मैं रिस्टार्ट करूँगी तो रिकॉर्डर बंद हो जाएगा। ओके, सो इतना काम था सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने का। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसको रीनेम कैसे किया जा सके।
मतलब मैंने IT5 से उसका नाम चेंज करना है, तो आप ऐसे ही लेफ्ट क्लिक करें और रीनेम पे क्लिक करें, तो आप IT5 से IT5 ETC, तो आप इसको रीनेम कर सकते हो। इसी तरह लेफ्ट क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आपने देखनी है तो आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और आपको ये सारी इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाएंगी, फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप मेंबर देख सकते हो कि ये किसका मेंबर है, यूज़र्स का, ठीक है। आप इसकी प्रोफाइल देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो प्रोफाइल के लिए उसने प्रोफाइल पाथ, लॉगिन स्क्रिप्ट और लोकल पाथ वगैरह ये सारे आपको चीज़ें एंटर करने पड़ेंगी और फिर आप उसके रूल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। ओके, the next thing is groups. Okay, so if you go to the groups, like we have different kinds of groups here. Each group have a different kind of description, like administrator group that was made for the administration purposes. We have the guest group. We have power group, remote desktop users. Okay, रिमोट डेस्कटॉप यूज़र बड़े कमाल का, ठीक है। जब आपको किसी सेकंड या थर्ड पार्टी को आपने लैपटॉप की एक्सेस देनी होती है, तो आप जो है वो रिमोट डेस्कटॉप यूज़र का ग्रुप क्रिएट करते हो और वहाँ पे आप डिफरेंट प्रिविलेजेस उसको असाइन कर देते हो। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र्स में जाती हूँ, ठीक है। तो सारी बात है, ग्रुप इट शुड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पर्सन्स। सो अभी मैंने IT5 का प्रिविलेज दी है, लेट से मैं यहाँ पे मज़ीद स्टूडेंट्स जो है ना वो सॉरी मज़ीद सेमेस्टर्स क्रिएट कर लेती हूँ, लाइक एक और यूज़र क्रिएट कर लेती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ IT3, और फुल नेम भी मैं उसको लेट से IT3 ही दे देती हूँ, और उसको पासवर्ड भी मैं अंबर ही दे देती हूँ, एंड कंफर्म पासवर्ड अंबर, and no, and check all these and create the user. Now let's create one more, which is IT7, full name IT7, and the password is Amber, and change the privileges and click on create and just close it. Now you can see we have 3 users here. Okay, so go to the group, left click on it, oh sorry, right click on it, and click on new group, and here we have enter the group name, like I'm going to enter students, and the description, this was made for practical purposes. Okay, so now the main thing is you have to have members here, like in this group we have to add members, like who is ये बिल्कुल इस तरह है कि मतलब जिस तरह व्हाट्सएप के ग्रुप हम क्रिएट करते हैं तो हम उसमें फिर मेंबर्स ऐड करते हैं, पर्सन्स ऐड करते हैं। तो ग्रुप तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आपने उसमें पर्सन्स भी तो ऐड करने हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द ऐड बटन and write the member name here. Okay, so I'm going to write IT7. So I don't know exactly, I mean, what was the name here, or I may have forgotten, or there may be a spelling mistake. So the best thing is to check name, and when you click on the check name, if the user is valid, then this will come up like that. Okay, and click on OK, and you can see one member is added here, which is IT7. Now if I again click on the add button and just enter IT third and check name, yeah, we have IT third. Then again add a member, and this time we're going to add IT5 and check name, and it's saying name not found because of IT5, and that was more like session. It was 2020 to 2025, I think so. And check for name. Okay, let us first confirm. So before adding IT5, so create the group, we can add it later. So close
and here you can see, where is it? Yeah, here we have students group. Okay, this was made for practical purposes. Let's again go to the users, and we have IT5 etc. So again go to the group and select the student and click on go to the properties, and here we can add more members. So type IT5 etc and check for the name, and yes, we have IT5 etc. Click on OK, and we have added one more user. Right now we have 3 users here. Click on apply and OK. So we have the group here, group created here. So the next task is to assign permissions to that specific group. Like if I wanted to assign a specific folder, or a specific file here, so what I have to do is assign that file to that group called students. Okay, let's right click on this, go to the properties, go to the security, and we have system, Ember, administrator, and let's click on edit, and go to the add option to add uh, user, or to add your group. So I want to add, and I want to add the student group, STUDENT. ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर इजी वर्ड्स में मैं आपको समझाऊँ, let's again close. Let's say I wanted to share this IT5 session. Okay, so I want to right click on it, and I will go to the properties. After going to the properties, I will go to the security. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से फोल्डर हैं जो इसको एक्सेस कर सकते हैं. सबसे पहला तो सिस्टम है, उसके दूसरे वाला कौन सा है, अंबर, and that account is unknown right now. Okay, so and this is the administrator account. So if you want to change the permission, like if I want to remove that unknown account, I don't know where it comes from. So what I have to do is simply click on the edit, and I will click on it and remove that account. So if you want to add the students group here, what you have to do is click on the add and write the name of the student group. So that was basically student, and check for the name. Oh, student. Why there's no count? Let's again confirm the group name. Students, that was not student, that was students. So STUDENT students, and check name, and yes, students account is available, and click on OK. Now the student can also access the file. So below we have some permissions, like what the student can do with the file. Okay, so permissions for student, like full control. If you want to give them full control, like they can modify, they can read, they can execute, etc. So you have to check that box, allow. If you don't want to, then click on deny. So if you don't want to give them full control, they won't be able to perform any action on these folders. So first, let's say I don't want to let them modify, but I would let them to read. Okay, so that's the read, so they can just read that files. So if I want to let them read and execute, and I also want to let them write. Okay, so I also want them to let them modify. तो ये एक वही बात होगी, फुल कंट्रोल ही दे रही हूँ मैं उन्हें. ठीक है, तो आप ये इस तरह से परमिशन सेट करने के बाद आप सिंपली या डायरेक्टली इस तरह से अप्लाई कर दो. ओके एंड ओके भाई, ठीक है. तो अब आप लोग देख सकते हो कि भाई ये जो तीनों पर्सन्स हैं, ये जो है ना IT5 के फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे जब भी आप दूसरे वाला अकाउंट ओपन करेंगे. राइट नाउ आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज whenever I try to restart the account, I cannot access the Wondershare Filmora there.
सो बेसिकली इसका पर्पस यही है कि आपने जब मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट करने होते हैं तो बजाय इसके कि आप हर एक यूज़र क्रिएट करो और हर एक सिंगल यूज़र को आप बारी बारी परमिशंस दो, आप सिंपली क्या करते हो, यूज़र क्रिएट करते हो। यूज़र क्रिएट करने के बाद आप एक ग्रुप क्रिएट करते हो। उस ग्रुप में आप उसी सेम जिनका जिनको सेम प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं वो सारे आप एक ग्रुप में फेंक देते हो उन सारे सबको, ठीक है, और उसी एक ग्रुप को आप वो एक फोल्डर असाइन कर देते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आज समझ आई होगी कि किस तरह से यूज़र क्रिएट करते हैं, किस तरह से ग्रुप क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम उनको परमिशन देते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ बताती चलूँ कि जब भी लेट से यूज़र आपने ये IT5 का फोल्डर असाइन किया हमने अभी अभी स्टूडेंट्स को, तो लेट से अगर उनके पास बाय चांस वो यहाँ पे जाते हैं इस तरह से पीसी पे, जब नई विंडो ओपन होगी पीसी पे जाते हैं और पीसी में लोकल डिस्क डी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, सो इट विल शो टू द यूजर लाइक देयर इज सम डिस्क called local disk D. So whenever they double click on it or try to open that folder, it won't open. It will ask for the admin password. Okay. So your data will be full-fledged, properly secured from other users. Hope so you get the idea how to create users and groups. Thanks for watching. Allah Hafiz.